Okay. So, other question that I had for you was any writing tips since you're a writer and that too best selling. Like I must say, it's a big thing. मतलब मेरे लिए तो authors से मिलना is so I would say like it's out of the moon for me, but I am overwhelmed right now. और फिर उसके बाद आपकी डेब्यू नॉवेल खुद ही बेस्ट सेलिंग हो जाए सो आई मस्ट से इट्स लाइक यू मस्ट हैव फेल्ट सो वंडरफुल लाइक यस an accomplishment and all. So any writing tip for the viewers who are like trying to be a writer, who are like thinking that they could publish? Okay, so for writing tips, for the writing tips, so writing tip is like you should have a story deep down inside of your heart, and you should know that how to represent that, and it should be uh, touching, like it should touch somebody's heart. So I would definitely say that writing tip is like this. You can write a book as like a first person that you are telling the story, or you can write a book as like a camera. The camera is watching. As like, uh, have you seen whenever we see any movie? So if that cameraman or the director wants us to focus on the actor and actresses, and everything gets blurred. The focus comes towards them. But if we have to tell that what's happening exactly, that tea stall person or tea vendor is saying something and how is he feeling, then we have to explain each and everything. So explanation, the first thing is explanation. It should be best and your story should be heart heart touching. I would definitely say this. And the third is you should be well aware about this that do not write for audience, write for yourself. Because if you are writing for yourself, if you are trying to satisfy yourself, then as like we usually say that dress up for yourself or do everything whatever you are doing in your life, do it for yourself. Then eventually those people who are really be like you and they will really get in touch with you. So तो ऐसी कोई पर्टिकुलर राइटिंग टिप नहीं है क्योंकि जो भी इंसान लिख रहा है वो उसको जो राइटर है जो अपने आप को वो जो अलग बनाता है दूसरे राइटर से वो ये है कि उसका खुद का एक राइटिंग स्टाइल है तो आप जैसा लिख रहे हो वो परफेक्ट है डू नॉट डिमोटिवेट योर सेल्फ because you are writing because you are a different author. You don't want to be like that another one author. It's like Chetan Bhagat is writing. So you are trying to you are trying to replicate the same way you are writing the same way as Chetan Bhagat is writing. तो कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं कि कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करते हैं कुछ लोग स्टोरी की मूवमेंट को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करते हैं तो लिखना आपको अपने स्टाइल में क्योंकि वही आपको ऑथर बनाता है आपका एक खुद का स्टाइल है जिससे लोग आपसे कनेक्ट होंगे तो दिस इज द फर्स्ट थिंग सेकेंड इज आपके पास स्टोरी होनी चाहिए इट शुड नॉट बी लाइक दैट यू हैव फर्स्ट यू आर थिंकिंग अबाउट द टाइटल देन यू आर थिंकिंग अभी लाइफ में क्या चल रहा है लोग किससे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे देन यू आर राइटिंग तो आपके पास खुद कोई स्टोरी नहीं है तो पहले आपके पास स्टोरी भी होनी चाहिए लाइक आई एम राइटिंग दिस एंड दैट और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ लिखने के बाद कैरेक्टर्स अपनी कहानी खुद लिखते हैं क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि डिवाइन गाइडेंस के बेसिस पर मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट मैं करती हूँ पर शुरू मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स पे मैं करती हूँ बट वो कहानी किस तरह से जाएगी वो कैरेक्टर की डिसाइड कर लेते हैं तो ये एक सिचुएशन है जो बनती है जब हम राइटिंग करते हैं एंड डू नॉट ट्राई टू बी द बेस्ट अगर आप बेस्ट बनने के चक्कर में आप नॉर्मल जो आप लिख रहे हो जो आप बेस्ट आपके माइंड में बेस्ट की डेफिनेशन क्या है दूसरे उसे किस तरह से बेस्ट देखते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आप की वैल्यू करनी है तो राइटिंग की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी तो देर इज नॉट पर्टिकुलर डिफरेंट टिप एज आई वुड डेफिनेटली से कि प्लॉट अच्छा होना चाहिए ट्विस्ट होने चाहिए तो कोई भी ऐसी राइटिंग टिप नहीं है बस पेन और पेपर है और आपके थॉट्स है और आपकी फीलिंग्स है और ऐसे थॉट्स और ऐसी फीलिंग जो दूसरे को ये महसूस करा सके कि हाँ स्टोरी में कुछ तो बात है यही है राइटिंग टिप और कुछ भी नहीं है एंड राइट फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स Yes, start with yourself. Okay. Other than that, I must say कि I am a big fan of your now. Seriously, मुझे आपकी बुक भी बहुत पसंद आई और after meeting you, after talking to you, I am really inspired. जो आप कह रहे हो ना that this might be a purpose to inspire people.
I know you don't need my fulfillment to like tell you that yes, but I'd still say that yes, you are inspiring people. A lot of them, I must say. Thank So, you so much. for people like me and for your other readers, could you please share about your upcoming projects, if there are any, or any kind of like, glimpses into it? Glimpses about my the trailer I am giving to you. Okay, so I am writing a love story again. So yes, so this is kind of love story where you are not feeling like you are getting into the love, but eventually you are. So that would be the baseline of that storyline of that. Uh, it is it is like friendship kind of love story. It starts with the friendship and getting end with the soulmate like this. Stages. Meeting a I two strangers. Yes. So it is when you will I have for myself only I have read it 50 times. damn, whenever I whenever I feel like low or I don't want to watch any, so I just take my book and start reading. Makes me feel like so happy. I started blushing and that so giddiness it's inside. going to be wonderful because I have added some elements in this like Christmas. Christmas is coming and Christmas and New Year. What do you think about New Year and then how? So it is going to be a lot of fun reading for my readers. So it is like. And as like in that earlier story, there were only three characters, but in this story, I have added four characters. Yes. Wonderful. Again, coming back to that thing that you say everything happens for a reason. Before this meeting, I was about to send a Google link because I'm more familiar with Google Meet. और मेरा Google पे background was Christmas background. But for some reasons like Zoom meeting was more preferable क्योंकि यहाँ पे recording ज़्यादा easy होती है. I was just thinking कि Christmas background थोड़ा अजीब तो नहीं हो जाएगा. And now you have that element in your book. I can't wait. Seriously. And I bought this like feeling like Yeah. Christmas. Yes. You're giving Christmas vibes. Yes. So Wonderful. when that book is really very deep inside. It is the story where everyone, as like my earlier story was related to the youth base only, that people who are above 20 or they can able to relate it because they are getting into the fake relationship and getting into the new one and understanding the real love. But this is the innocent love story or everyone can relate with that story. I must say. And this is the story that everybody wants to live. Oh Everybody, I God. would say. I'm damn sure because I too want to live the same story, love story like this. And thinking about that. And so I will not say each and everything, but yes, I'm very excited. But yes, I just want to say, as like this is only the story I was writing, and then suddenly I got an idea and I just stopped writing that love story and started writing non-fiction. It became instant bestseller within 2 days. And then again, I started writing and I have finished that book now. So let's see if any non-fiction will come. But yes, this time there will be romance fiction because I have to maintain, the romance of Riyanshi and Vishka. You should. Yes. You seriously. I mean, I really like it. I personally prefer those genres more. So I can't wait for your new book to get published. I'll be the first one to buy, and I'm definitely dropping you a text that yes, ma'am, I read your book. Thank you so much. I had this one question during our interview. You mentioned about dreams, like the signals that you grab onto, and then you connect yourself with your higher self, and then you execute a lot of things in your lives, given how you write books and different things. And your YouTube channel is also about the same thing, where you motivate people to connect with their higher self. My favorite video of yours is The Power of I Am. I watched it and I rewatched it because it was inspiring. As you said, like you want to inspire people and you are inspiring, ma'am. You really are. And thank you for that. So I would like to know more.
whatever you have to share in this context, that how do you actually connect with your higher self, and how do you like maintain that mindfulness all of the time? This is the personal question coming by your heart. It is. If you I want, I can am stop the recording. I'll keep it to just myself. so in because Okay. I am so happy that you got this, or you want to ask this. I'm so happy because I'm feeling like, getting the energy or vibe that I'm getting from the screen only. That how much do you want to know that how actually it is working, how it can be so much. So first is the relation, that whatever the God you are usually, think of. So which one God do you think that you are so connected with? Well, I am a religious person, so मैं शिव जी और गणेश जी और हनुमान जी में बहुत विश्वास रखती हूँ. So I like ओके, अच्छा। तो एक जो जिनको आप हमेशा ही मानते हो, जिनका जिनका नाम लेके आपको लगता है कि बस, शिव जी. और आपने ग्रुप बना कि अगर ये नहीं है तो ये संभाल लेंगे। हाँ, kind of. It's all of them for different things, but Okay, in so this general. is one of Hmm. answer. I would like to answer this. And one more thing, that sometimes I feel like, as like I teach English, so I usually say to my student only, I really have the problem of speaking, switching into Hindi and English, switching in, then I face the problem. So either I will speak only English, or either I will speak, or I will speak in Hindi. So I would really love to answer this in Hindi. तो जिस भी भगवान को अगर आप मानते हो, जो भी भगवान आप मानते हो, जैसे आप गणेश जी को मानते हो, तो सबसे पहले आपको उनसे कनेक्शन बनाना है। एक होता है कि आप सिर्फ उनको भगवान मानते हो, भगवान तो सब मानते हैं। आप क्या मानते हो? क्या आप उन्हें बहुत अच्छा दोस्त मानते हो? अगर आप उन्हें दोस्त बना लो, जैसे सपोज कि आप बोलते हो कि आपने उन्हें फ्रेंड बना लिया, और अब आप उनसे बात कर रहे हो कि आपको पता है आज क्या हुआ। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, उन्हें सब पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट फिर भी आप उन्हें बताओ, जैसे आप अपने दोस्त को कॉल करके बताते हो, क्योंकि भगवान को हमसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें पता सब कुछ है, बट वो अदिति के मुंह से सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अदिति मेरे पास बैठे और मुझसे बात करे। अब आपको पता है कि वो हर जगह है। आप बैठो और आप बोलो अपने माइंड में, या आप उनका नाम रख सकते हो। अगर आपको नाम नहीं रखना तो आपको ये बताना है कि आपको पता है आज मैं वहां गई थी और मैंने उनसे बात की थी, मुझे काफी अच्छा लगा, और मुझे तो ऐसा लगा जैसे आपने ही उन्हें भेजा है। मुझे बहुत खुशी हुई, और मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। आप उनसे बात करो। जैसे हम कहते हैं कि हम दोस्त तो बना लेते हैं, बट अगर हम दोस्तों को टाइम ना दें तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं होती। सेम है, भगवान से भी कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, उन्हें वो पसंद आता है। जैसे हम अपने पेरेंट्स को बताएं, अपना लव को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। आपके मन में है कि आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो, पर बता नहीं रहे, कब बताओगे? अगर वो आपके सामने है तो उन्हें बताओ दैट हाउ मच डू यू लव एंड डू यू केयर अबाउट। सो द सेम थिंग, कनेक्शन बनाने के लिए माइंडफुलनेस तो आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो भी काम कर रहे हो सिर्फ वही काम होना चाहिए। ये माइंडफुलनेस है कि आपका माइंड सिर्फ एक ही जगह है। जैसे अगर आप खाना बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, तो सब्जी काटते ही आपका ध्यान होना चाहिए कि इसको मुझे परफेक्ट करना है। आपका माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे साथ ये बुरा हो गया, इससे मैं ये बात करूंगी, मैंने अपनी मम्मी को बोला था मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, उन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए बोल दिया। अब ये सारी जो थॉट्स है ना, इसकी एनर्जी है, वो खाने में जा रही है। अब उससे खाना बनता है। तो आपका जो गुस्सा था, आपका जो एंगर था, वो सब कुछ आपके खाने में बन चुका है। तो जब आप उस फूड को सर्व करोगे, तो जब लोग उसे खाएंगे, उनको भी वही सेम एंगर, सेम फ्रस्ट्रेशन वो महसूस होगी। तो हर चीज एनर्जी है। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए जिस जो चीज आप कर रहे हो बस उसी पर फोकस। जैसे अभी इस इंटरव्यू को ले रहे हो, तो आपका फोकस सिर्फ इस पे ही है। आपको मतलब नहीं है कि दूसरा क्या बोल रहा है, क्या आपने उन्हें शांत कर दिया, अभी थोड़ी देर के लिए शांत करो बस। उसके बाद मैं बाद में बात करूंगी आपसे। फोकस दो आप। अभी आप सिर्फ इस कन्वर्जेशन में फोकस है। सेम माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, प्रेजेंट में, बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाना, वो माइंडफुलनेस है। एंड हाउ टू मेक कनेक्शन विद द गॉड, इट्स लाइक मेक योरसेल्फ मोर कंफर्टेबल। भगवान को अपना दोस्त बना लो। जैसे अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड कृष्णा को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण, जिनको मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ। तो एज वी आर थ्री सिबलिंग्स, तो हम तीन बहनें हैं। तो मुझसे बड़ी है, फिर मैं हूँ, फिर मुझसे छोटी है। तो हमारे सबसे बड़े भाई वही हैं। तो मतलब रक्षाबंधन है तो मैं उन्हें राखी बांधती हूँ।
अब कुछ भी चीज हो तो अब मैं उन्हें प्यार से बोलती हूँ। जैसे महाभारत चला था तो महाभारत से ही मुझे ज्यादा कनेक्शन महसूस हुआ, तो लॉकडाउन के टाइम पर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी, उस समय मैं ये किताब लिख भी रही थी शायद। तो एक कनेक्शन उनसे महसूस हुआ, और उसमें होता है ना कि संस्कृत वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने वहां से ये वर्ड लिया भ्राताश्री। तो अब मैं उनको बोलती हूँ भ्राताश्री। भ्राताश्री, आप बताओ कि आप क्या चाहते हो, ये तो सब ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। मैं चल रहा हूँ भ्राताश्री, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे ये चीज करनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए। तो भ्राताश्री भ्राताश्री, आप उनसे बात करते हो, सो रहे हो तो बात करो, उठ रहे हो तो नहीं बताओ। जैसे अगर मेरा रूटीन देखा जाए तो मुझे दिन रूटीन अगर मैं मेरा रूटीन तो मैं किसी के साथ नहीं, तो मेरे मन में सबसे पहले जो क्लिक करता है ना, क्योंकि ट्रैफिक से आने वाली चीज है, मैं क्या करूँ, क्लिक करता है जैसा मैं मानती हूँ, मैं वही कर रही हूँ। भारत को मुझे करना चाहिए, जैसे मुझे चाहिए था कि पहले लैपटॉप में मुझे नहीं था, किस चीज में मुझे मतलब कोई भी चीज अगर समझ में मुझे कुछ भी चाह, दो शब्द मेरे मन में सबसे पहले क्लिक करता है, वही मैं जवाब। मैं उनसे पूछती हूँ, अगर मैं ज्यादा भी परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आया तो समझ में नहीं आता, तो मैं रात को जब सोती थी तो मैं ये देखती थी कि प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ। वो मेरे सपने में आते हैं, मुझे बताते हैं कि ऐसा 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 करो, ऐसा करोगे तो ये होगा। तो इट इज नॉट ओनली द कनेक्शन विद द लॉर्ड, इट्स द कनेक्शन विद आई हैड अ कनेक्शन विद माँ। तो माँ का हम बोले तो उनसे मेरा कनेक्शन है। जैसे एग्जाम्पल, यू विल नॉट बिलीव दैट आई हैव अ कनेक्शन विद देम। तो अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखती तो फिर शायद अब ये सुनने में बहुत नॉर्मल लगेगा आपको, या फिर बहुत अजीब भी लग सकता है कि अभी विंटर शुरू हो चुकी है। So if I am so busy with the work, I'm not applying for master editor, I'm not doing anything. Especially मैम, मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब, वो आपका ईयरफोन गिर गया ना, तो आवाज शायद रिवर्बरेट हो रही है। तो हाँ। now am I audible? यस मैम, परफेक्ट। This is I said to Bhatakli, एक ईयरफोन गिरा दिया आपने। कोई बात नहीं। You said by yourself, okay ma'am, stop the video and go. या, This is क्योंकि वो वॉइस थोड़ी रिवर्बरेट हो रही थी। so yes. So like if I'm not taking care of myself, so हम्म। they will come into my, वो मेरे सपनों में आएंगे और मुझे बताएंगे कि अपना ध्यान रखो, तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे। Like you did not apply the moisturizer today, what happened? प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो गई, लाइक दिस। तो अभी सुनने में बहुत अजीब लगेगा, बट जो लोग रियलिस्टिक तरीके से जो विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअली जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, उनको ये पता है कि ये क्या चीज है। मतलब आप उस पावर पर विश्वास रख रहे हो, जैसे भी मैंने कहा भ्रातृ मेरे साथ बैठ जाओ, इंटरव्यू है। हर चीज, मतलब हर चीज अगर आप उनसे पूछोगे, आप उन्हें प्रायोरिटी तो दो। आप उनसे ये तो कहो कि मेरे साथ रहो, आप उनसे ये कहो कि मुझे बताओ क्या सही है क्या गलत है, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे। बट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उनके सामने रोने के लिए जाते हैं कि ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। उनसे पूछा ही नहीं कभी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दिस इज समथिंग विच आई बिलीव द मोस्ट, एंड आई मेक द कनेक्शन लाइक दिस, यू कैन डू दिस। आप इसको और ज्यादा गहरा कनेक्शन आप तब बनाओगे जब दिल से आप उनसे बात करोगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको कुछ मिलने वाला है, इसीलिए कि आप चाहते हो कि वो आपको सुने। आप उनसे बात करो, उनसे बोलो कि इतने टाइम तक मैं, मतलब माफी मांगती हूँ कि इतने टाइम तक मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में इतनी बिजी थी कि मैं आपको भूल गई, जिसने दुनिया दी मैं उससे भूल गई। पर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं इन सारी क्वेश्चंस का जवाब चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुनो। अगर कुछ इस तरह से आपका कनेक्शन होगा तो आप धीरे धीरे मैजिक देखने लगोगे अपनी लाइफ, जिसको हम कहते हैं। अब आप हर चीज स्पिरिचुअल तरीके से, वो आपसे बात भी करेंगे, वो आपको बताएंगे,
फिर बैठे बैठे ये सोचना कि मुझे आज पिज्जा खाने का मन है, अपने आप ही आपके सामने पिज्जा भी आ जाएगा, क्योंकि वो ध्यान रखेंगे फिर, वो आपका ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने बोला कि आप मुझे संभालो। और मुझे बताओ कि मैं, मुझे किस चीज के लिए आपने जन्म दिया, मैं क्यों आई हूँ इस धरती पर। आप उनका आप उनका काम करो, वो आपका काम करेंगे। तो फ्रेंड, इट्स लाइक फ्रेंड, यू आर मेकिंग द बॉन्ड। जैसे आपकी मम्मी के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, और कुछ गलती भी होती है तो उन्हें बताओ कि मेरी ये गलती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सही नहीं किया। तो आई थिंक आई मेक अ कनेक्शन लाइक दिस। और देखो, सारी चीजें ऐसी है कि मुझे, ये एक ऐसी चीज है जो मैंने कभी किसी से बोली नहीं आज तक। यू आर द फर्स्ट पर्सन दैट आई एम सेइंग दिस थिंग। और जो ये इंटरव्यू देखेगा वो तो शॉक ही हो जाएगा। ऐसा भी कुछ है क्या? दिस इज। वाओ, आई फील रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड, सीरियसली। और आपने एक बात बोली जो मुझे बहुत पसंद आई, कि उनसे दोस्ती बनाओ और उनको टाइम दो, क्योंकि अगर जिस दोस्ती को टाइम नहीं देते तो फिर वो दोस्ती दोस्ती नहीं रहती। सो आई रियली लाइक इट कि जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है आप कभी उसे टाइम देते ही नहीं हो, समहाउ भूल जाते हो। तो वो शक्ति ही सबसे, जो शक्ति आपके अंदर मौजूद है, आप उससे कनेक्ट तो कर रहे हो। जैसे अगर आप उनको दोस्त मानोगे, आप जब उनसे बात करोगे, आप बोलोगे कि अदिति को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, अदिति क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती, उन्हें बताओ। भगवान तो उन्हें सब मानते हैं, आप उन्हें अपना दोस्त बनाओ। आप उन्हें बताओ कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, मुझे आज कैसा लगा, मैंने किससे आज बात की। जैसे आज मैंने अदिति से बात की तो मैं उन्हें बताऊंगी मैंने अदिति से बात की, मुझे पता है वो देख रहे हैं, पर मेरे मुंह से ये बताना उन्हें अच्छा लगेगा। हम्म। जैसे हमें ऐसा होता है ना कि सिस्टर्स के साथ जब हम बैठे होते हैं तो हमें पता होता है कि बहुत अच्छा, इसका आज का दिन बहुत अच्छा था, बट जब वो खुद आके बताती है कि आज पता है दीदी बहुत अच्छा दिन था, तो आपको अलग से खुशी होती है कि शायद आप स्पेशल हो। ऐसे ही भगवान के साथ भी होता है, उस हायर पावर के साथ होता है, चाहे वो अल्लाह हो, या जीसस हो, किसी किसी भी भगवान को आप मान रहे हो, क्या जो भी आपने नाम उन्हें दिया हो, दिस इज समथिंग कि आप उन्हें खुद बताओ। अदिति क्या महसूस किया, अदिति ने सिचुएशन में वो बताओ कि अदिति क्या चाहती है। तो दिस इज समथिंग Yeah, दैट यू हैव द बॉन्ड विद द हायर पावर लाइक दिस, लाइक माय ब्रदर शी इज वाचिंग मी लाइक। बिल्कुल। वाओ, I seriously don't have enough words to express how I'm feeling. I'm all giddy right now. I'm so energized. I'm just happy in general. Like, I don't know how to express, seriously. I'm just thankful कि ये interview हुआ. I got to talk to you. I got to know how you think, how you feel, especially this thing which you just shared. And yeah, मैं भी So process ही कर रही हूँ थोड़ा. so you also thinking, maybe you had a question in your mind and you got an answer of it. Somehow, yes, I did. I did. आपने आपने Maybe बोला ना जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं और इवेंचुअली कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स लाइफ में होते हैं, एंड देन यस यस दैट्स द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. सो आई हैड 2 or 3 ऑफ दोज मोमेंट्स अभी इस मीटिंग में. और अभी जब ये मीटिंग बीच में ओवर हो गई थी, आई वाज सो एंग्री कि यार जूम, व्हाई आर यू डूइंग दिस. I still have to ask that special question to her. I can't let go of this meeting without that. So I'm grateful that and this happened. maybe we were thinking like that, okay, this interview will, it will be so formal and you will be asking question, and but it is like meeting two people and they are feeling the same, they are feeling so connected, the soul partner, or the soul sister, or soul is connected. So that's why it Truly. seems like they don't want to end this meeting, it seems like continue. Please, yes, keep Continue. speaking. I'll listen to you all day. Seriously. It seems like कि इंटरव्यू कभी खत्म ना हो। अब ये हाँ. पता नहीं कोई ऐसा है, या फिर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, या कोई भी कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट, बट आई एम so natural, and I always speak as people usually say that going to the interview prepared and then Yeah. answering, no,
It's those who are getting into, जो लोग एक्चुअल में आपसे कनेक्ट होंगे वो होंगे क्योंकि Hmm. वो चाहता है। हम ये कहते हैं ना कि वो तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो वो चाहता है, Hmm. तू कर वो जो वो चाहता है, होगा वो फिर जो तू चाहता है। Wow, that is beautiful. That is very strong. चला रिपीट अगेन सो दैट Yes, यू विल yes, please, अंडरस्टैंड। please. तू करता वो है जो तू चाहता है, लाइक टिपिक आर्चर जैसे हम कहते हैं ना, हम जो चाहते, तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो वो चाहता है, तू कर वो जो वो चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है। This is really beautiful, ma'am. Seriously. Wow. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम मीटिंग यू हियर। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग लाइक so nostalgic. Maybe you are feeling inside of you I very am. happy and Yes, I'm feeling very happy. I'm feeling elated. And like, मैं describe नहीं कर पा रही हूँ. Like, I'm very happy that this thing happened. Earlier, I was थोड़ा सा scared because I have exams going on. Plus, ये procrastinate होता जा रहा था. काफी delay हो गया है. Plus, interviews are usually formal, as you said. But it's just something very different, very beautiful, I must say. thank you. Not me. You do. Through me. But I'll thank you that this happened to me through you. So, thank you. Thanks to you. Well, I've not done a lot of interviews, but this one is by far my favorite. Like it. And I can't Will I wait get for this? your book to come out. Yes, yes, you were saying something. Will I get the recording also? Yes, definitely. I'll share this with Prashanta. Okay, I'll I do will this. miss you. Yes, ma'am? If I will miss you, then I will feel you. Oh, now that's okay. Thank you so much. And of course, I'll be doing the same. I'm going to come back to this video again and again because somehow this video has answered a lot of my questions. Like the way you draw significance from everything that happens in your life. I think I have started doing this starting this interview. So I really liked it. And I hope for our viewers here, those who will be watching this video, I hope that they get as much as I have gotten from you, the knowledge, the inspiration, the zeal to work on things that I like. So, and definitely, people, you should check out ma'am's books. And up on my TBR, like next book I'm going to read is definitely Bliss and Great, Unstoppable. So you should also read ma'am's books because they are beautiful, they are simply written, they are realistic, and they inspire you. As ma'am inspire you, they also inspire you. And check out her YouTube channel where she talks uh, about the same thing, about mindfulness, about pursuing your life in a better way. And I think this video has been the most uh, personally this interview has been very deeply rooted towards it, towards this mindfulness, towards the soul connection. I think this would make one of your wonderful videos if you ever decide to put it there. So I'm very grateful that this happened. Thank you so much, ma'am. It was wonderful to have you. Seriously, words cannot satisfy. They cannot suffice the power that you have transpired into this interview. So thanks. Seriously. Thanks to the higher power. Thanks to you. That you are putting the things very nicely and the way you have said. And I also feel that those who are meant to watch this could able to transform their life too. As like They somehow can. Aditi also having a conversation with me and then feeling like something has changed there. Mhm. It has. It has. And see, like we are literally, we don't have any. मतलब कब time निकल जा रहा है पता नहीं चल रहा. Again फिर से Zoom की warning आ गई that you have 10 minutes left. And I was like, अभी तो start हुई थी. Once again. Okay. I'll Okay, end wish the to meet. recording. I wish to meet you.